हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज कुमार राय। मैंने इस बार के सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में 117वीं रैंक पाई और आज मैं बताऊंगा अपने ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। मैंने इस ऑप्शनल से 2016 और 17 दोनों में मेंस में पेपर लिखा और दोनों पेपर में मेरे डिसेंट मार्क्स आए। इन 2016 आई गॉट 282 मार्क्स, although I could not clear mains, but this was a very decent marks considering the standard of last year. And this year I got 298 marks. This was also pretty good marks. Now if I talk about my strategy of public administration, I have to talk about a person, my teacher, Mr. Salamuddin Ansari of Lukman IAS. Ansari sir has been the guiding light of my optional preparation and also for my GS and essay paper. So what I did was I relied heavily on the class notes of Ansari sir and उसके अलावा मैंने कुछ बुक्स थी उसको पढ़ा। तो सबसे पहले we'll discuss the book list. In books, in paper 1, one has to read Prasad and Prasad for thinkers and New Horizons of Public Administration by Mohit Bhattacharya. These are the two most important books for paper 1. These will cover the major areas of paper 1 और जो left over areas हैं that can be done by class notes of Ansari sir or by a Ribam book. For paper 2, अभी the recent trend has been that paper 2 is their question are very dynamic. So paper 2 में apart from Arora and Goyal book, I read class notes of Ansari sir and some ARC reports like 4th report, 5th report, 6th report and 10th report. These are the 4 reports that one has to read before appearing for the examination. One has to be thorough with these 4 reports because questions are directly asked from these reports. For example, there was a direct question on principle of subsidiarity in last year's public administration paper. इसके अलावा the most important thing in public administration is understanding the question and writing the answer that is desired. So these things will come only with practice. So once we are done with reading the book list, reading the syllabus, preparing ourselves for optional, one has to appear in a test series to hone one's writing ability and more importantly in public administration, interlinking of various topics from same paper and from different paper. Paper 1 is about theories of administration and paper 2 is about Indian administration. So while answering questions in paper 1, if we are able to link the concepts of paper 2, if we are able to give example of Indian administration, I think that will add much more value to your preparation. So what I did was I wrote around 10 tests of public administration this year and around 5 tests I wrote last year in Lukman IAS. वहाँ से मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीडबैक मिलता था जिसकी वजह से मैं लगातार इम्प्रूव कर पाया अपने आंसर्स को, रेलेवेंट पॉइंट्स डाल पाया। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इस पेपर में कि हर क्वेश्चन का एक कंटेक्स्ट होता है। जैसे लास्ट ईयर अ क्वेश्चन ऑन लिटरल एंट्री वाज आस्क्ड इन बोथ द पेपर्स and we had to answer the question in different way in both the papers. In paper 1 we had to adopt more of a theoretical approach. In paper 2 we had to discuss the practical nuances of lateral entry. So हमारा बेंड ऑफ माइंड भी ऐसा होना चाहिए कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई योजना पढ़ रहे हैं या कुरुक्षेत्र पढ़ रहे हैं तो उसको आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक से रिलेट करते हुए चलना पड़ेगा। जैसे इफ़ I had to appear in mains this year, I would think of a topic which is service and cadre allocation. Service and cadre allocation has been in news this year for around 1 and 2 weeks, and there were many articles written about it. So हो सकता है कि इस साल एक क्वेश्चन आ जाए कि what do you think about the current service and cadre allocation policy and is there a need for change?
This is a very good probable question. So in public administration, you have to remain dynamic for paper 2, and for paper 1 also. You have to put things into perspective, put things into context, and use the relevant issues. For every theory of administration, there are some context which make it relevant in today's time. So we have to prepare in that manner, and practice is the most important thing, not only in public administration but in all of the paper. So once we are done with the reading of the subject, we have to prepare it, we have to write test, we have to try to interlink the topics from different paper, from both the papers, and we have to integrate our preparation of public administration with GS. One area where students with public administration optional go wrong is that they write their GS paper 2 in as much depth as they write it in public administration. ये समझिए कि GS पेपर 2 में आपको जनरल लिखना होता है, और सेम क्वेश्चन इफ इट कम्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यू हैव टू राइट इट इन डिफरेंट इन अ वेरी नुआंस्ड मैनर. वहाँ पे आपको कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी यूज़ करने पड़ सकते हैं, कोई थिंकर का नाम भी डालना पड़ सकता है, थिंकर की थ्योरी डालनी पड़ सकती है. बट GS2 में अगर वही सवाल आता है तो आपको उसका प्लेन एंड सिंपल एनालिसिस करनी होती है. अगर ये डिफरेंस हम मेंटेन कर पाते हैं तो दोनों जगह हमारे मार्क्स अच्छे होंगे. फाइनली जब हम एक बार सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं, एक बार तैयार कर लेते हैं अपने ऑप्शनल्स को, तो मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर पेपर हमको 20 साल का 25 साल का अटेम्प्ट करना शुरू करना चाहिए. उससे हम लिखें, डेली 1-2 सवाल लिख सकते हैं और देखें कि क्या हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं. इसको आप चेक भी करा सकते हैं अगर आपका कोई पीयर ग्रुप है तो, और कहीं से आपको उसका सही आंसर या मॉडल आंसर टाइप का मिले तो उससे भी कंपेयर कर सकते हैं. एक आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं. हालांकि रिसेंट ईयर्स में काफ़ी चेंज आया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पैटर्न में. फ्रॉम 2012 बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाने लगे थे, बट 16 एंड 17 का पेपर वॉज रिलेटिवली ईजी और इसको आसानी से अटेम्प्ट किया जा सकता था. मेरा एक्सपीरियंस ये है कि पेपर 2 आने वाले टाइम में और डायनेमिक होगा, और इसमें करंट अफेयर्स और करंट बेस्ड जो हैपनिंग्स हैं इससे काफ़ी सवाल बनेंगे, और उसमें मुश्किल ये होगा कि इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट कैसे डालें, कि इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंसेप्ट से कैसे रिलेट करें. तो इस लाइन पे भी प्रैक्टिस हमको करने की ज़रूरत है. सो दिस वाज माय स्ट्रेटजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यू कैन राइट अ मेल टू मी on srjr147@gmail.com. I can reply a bit late, but if your query is genuine, I'll reply for sure.